Hello students, welcome to the Najit Nadre's physics classes. Today I am teaching you power and its applications. What is power and how uh, applications, what are its applications, how we can develop application techniques regarding this power. तो पहले मैं first of all let's define what is power. Power is you come across power everywhere in the physics field, everywhere, not only here. Power of a motor, electrical power, the thermal power, emissive power, absorptive power, everywhere. Thermodynamics, current electricity, and mechanics. So we need to define what is power. First point that I want to do is power. पावर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, थर्मल हो, पावर का एक ही है कि इट सिंपली मीन्स एनर्जी डिलीवर्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी क्रिएटेड, एनर्जी डिसिपेटेड, energy change in 1 second. How much energy you absorb in 1 second? That is absorptive power. Our body absorbs energy through thermal radiations. We absorb radiations. How much energy you absorb in 1 second is absorptive power. How much energy you reflect or you emit in 1 second is emissive power. You have a coil, heating coil. उस पर लिखा होता है 1000 watt. Means when current passes through this coil, it gives you heat. The coil, electrical coil, which you use in your homes, it gives you heat, energy in 1 second. How much? 1000 watt लिखा है ना उस पर. Means it gives you 1000 joules of heat in 1 second. You have electrical lamps. Lamps पर लिखा होता है 20 watt, 10 watt, means it gives you 10 joules of energy in the form of light in 1 second. Means power is energy delivered, energy change, energy dissipated, energy transfer in 1 second. Whether the energy is thermal, electrical, mechanical, whatever. Also this power in mechanics, it is work done by time. After all, work done is also an energy dissipated, energy delivered in 1 second. That is power. So mathematically, power is work done. In mechanics, work done, power is work done in 1 second. Or rate of doing work. Rate of doing work. Power is equal to delta W, that is work done, is not change in work. Delta W is work by delta T. Equation number first. It is work done in 1 second. It's a mechanical power. But electrical power, whether it's a lamp, when current passes through a coil, it gives you heat. That means how much energy you get from the electrical coil in 1 second, that is electrical power. You have lamps, you have bulbs, and these give you light. How much energy it gives you in 1 second is power. That is written on the lamps, 20 watt, 30 watt, 60 watt. 60 watt lamp means it gives you 60 joules of energy in 1 second. Okay, now, but this is average power. Average power means, you see, when you are doing work, suppose you start doing work from early in the morning at 10 till late in the evening, 6 p.m. 10 in the morning, 6 p.m. in the evening. You have put in so many hours of work. From 10 in the morning, 6 in the evening, you have put so many hours of work there, and you have worked, suppose, 1000 joules. That 1000 by 6 hours, by the time interval, that is average power. Average is total by total. Total work done by total time. That is how much work you have done in 1 second, but that on the average. That is average power. Average is always total by total.
टोटल वर्क डन, जैसे एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. Instantaneous means at a particular time. Suppose you start working from early in the morning till late in the evening, but at 1 p.m. you were sitting idle and you were taking some rest. अगर मैं आपसे पूछूं 1 बजे पर आपका पावर क्या था, What was your power at 1 p.m. मैं एक खास टाइम देता हूं, उस वक्त तो आप बैठे थे. तो जब आप बैठे थे, जब उस वक्त आप बैठे थे, तो what was power at that time? 0, because you were at rest. बट एवरेज में टोटल बाय टोटल लिया जाएगा. एवरेज में सारा जो टाइम इंटरवल है वो लिया जाएगा. उस सारे टाइम इंटरवल में आपने कितना काम किया, वो सारा वर्क डन बाय सारा जो टोटल टाइम है उसमें आपको एवरेज पावर मिल जाएगा. इंस्टेंटेनियस मींस एट ए पर्टिकुलर टाइम. उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर शायद आप ज्यादा काम कर रहे थे, शायद आप कम काम कर रहे थे, शायद आप कम एनर्जी डिलीवर कर रहे थे. तो उस पर्टिकुलर टाइम पर दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर. एवरेज और इंस्टेंटेनियस में यही फर्क है. एवरेज में आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस में सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता है. एंड इंस्टेंटेनियस पावर हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस कोई भी फिजिकल फंक्शन निकालना हो तो उसके लिए आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा. बट लेट मी गो टू दिस इज एवरेज पावर. टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज एवरेज पावर. ओके, now this is the definition for power, and obviously power is scalar and it is SI unit is joule per second, क्योंकि वर्क डन जूल है, टाइम नीचे सेकंड है, जूल पर सेकंड. और जूल पर सेकंड उसका और एक नाम दिया है वॉट. जूल पर सेकंड इज वॉट. सो द SI unit for power the SI unit for power is joule per second. That is what? That is what? Now, how do we define instantaneous power? Power at a particular time. For that, I have already told you, calculus is the answer. You have to differentiate work. So, instantaneous power is dW by dt, यानी कि differentiation of work. That is the equation 2 gives the instantaneous power. Gives the instantaneous power. मैं इंस्टेंटेनियस पावर का और एक इक्वेशन आपको निकाल कर देता हूं कि इजी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए. इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए अगर आपको फोर्स पता है और वेलोसिटी भी उस ऑब्जेक्ट का पता है, so you know the force applied on the object and the velocity of the object at a particular time, you can find the instantaneous power that too instantly, very quickly. Okay, now let me pick up this equation and let me go ahead with this equation. Let me see what I can get from this equation. Okay, तो जरा देखिए, ये पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर इज dW by dt. पावर स्केलर है, don't forget that. And its SI unit is joule per second, that is watt. Okay, now I will write P equal to d by dt. यह वर्क जो है इसको मैं लिखूंगा F dot S. F dot S if force is constant. If force is constant. This you already know. ये मैंने पहले ही बताया है. You must watch lectures. Watch the lectures in a systematic way. In a very very systematic way so that you don't miss anything. जैसे अगर आपने वर्क का लेक्चर अटेंड नहीं किया है या वर्क का लेक्चर जो है वो आपने वॉच नहीं किया है, आपको कैसे पता चलेगा ये जो वर्क है मैंने F.S लिखा, कैसे पता चलेगा आपको ये सब? तो इसलिए ये जो इसका भी जो लेक्चर है वो भी आप देख लेना पहले, फिर ये लेक्चर देख लेना. सो P इज इक्वल टू, अगर F कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और डॉट करोगे इसका डिफरेंशिएशन ds by dt, ऐसे कुछ. सो इट इज पावर इज इक्वल टू F, लेकिन आपको पता है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो पावर इज इक्वल टू F डॉट V, दैट्स इट. और एक फॉर्मूला है, फोर्स आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, इनके दरमियान जो एंगल है वो अगर आपको पता है, दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड पावर डिलीवर्ड.
You can find power delivered. अच्छा, तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, इस फॉर्मूला को. ठीक, ओके, थोड़ा सा इस फॉर्मूला को मैं आगे ले जाता हूं. चलिए, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, दैट इज पावर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा. ये थीटा एंगल है ना, बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी. बट थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी. अच्छा, यहां अगर थीटा 0 है, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में. ये फोर्स किसका, वो मशीन, वो पर्सन विच डिलीवर्स पावर, या वो मशीन विच डिलीवर्स पावर, या वो मोटर विच डिलीवर्स पावर, ये उसका फोर्स है. तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है, ये एजेंट का फोर्स है. वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है जिस पर पावर जिसको पावर डिलीवर किया जाता है. सपोज आई एम अप्लाइंग द फोर्स, सो दिस इज माय फोर्स. ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी वो ये है, एंगल उसका वेलोसिटी एंड माय फोर्स, इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, दैट थीटा इज इक्वल टू 0. और पावर जो है दैट इज एफ वी, पॉजिटिव पावर. पॉजिटिव पावर मींस जब मैं उस पर पॉजिटिव पावर डिलीवर करूंगा तो उसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा. हाउ मच एनर्जी, उसका एनर्जी कितना एक सेकंड में इंक्रीज होगा, दैट इज पावर डिलीवर्ड टू हिम. तो आई विल बी लूजिंग एनर्जी ऑब्वियसली बिकॉज आई डिलीवर एनर्जी टू हिम. अच्छा, इफ थीटा इज 90, पावर इज इक्वल टू कॉस 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो पावर इज 0. तो इफ फोर्स और वेलोसिटी का जो एंगल है वो अगर 90 है, समझो नो पावर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट. हाँ, whatever force you apply, the energy of that object is not going to change. आप पावर डिलीवर करते हैं, लेकिन आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा और उसको पावर डिलीवर नहीं होता. तो अगर उसको पावर डिलीवर नहीं होता तो वो आप पावर, आपका जो एनर्जी है वो लूज नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट डिलीवरिंग इवन इफ यू अप्लाई फोर्स. इफ थीटा इज 180, पावर डिलीवर्ड इज minus FV, दैट मीन्स अगर नेगेटिव पावर है, इसका मतलब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैंने वहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने फोर्स यूं अप्लाई किया, इसका मतलब मैं उसी का एनर्जी ले लूंगा. आई विल एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम हिम बिकॉज ही विल कम लाइक दिस, माई फोर्स इज लाइक दिस, his velocity will now decrease, means I am extracting energy from him, means negative power has been delivered to the object. Negative power has been delivered to the object, means his energy decreases, not increases. If the object energy increases in time, means positive power is being delivered to it. If it is energy, object energy decreases with time, that means negative power has been delivered to it. Okay, तो ये आप याद रखेंगे because these are the things that will be used now. Point number 2. This was first point about power. If I repeat these things, you have a look. Power is nothing but energy change in 1 second. Energy delivered, energy dissipated, energy absorbed, energy emitted in 1 second. Mechanical power, work done in 1 second. Rate of doing work is power. When you deliver power to an object, its energy will increase. How much energy it is, how much energy will increase in 1 second is power delivered to the object. So simple. And it is SI into joule per second, and it's a scalar. Point number 2. Point number 2. There is one more unit for power, British system. They have been using 1 horsepower. That is equal to 746 watt. ये याद रखना है, कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ता है. In problems you need to convert watt into horsepower. One more thing about this power is, sometimes we convert energy we put in terms of watts, watt hours. You see here, how can we develop such a unit? Have a look. We developed such a unit. You see, power is equal to energy change, work done in 1 second. This is watt, this is joule, this is second. So what is 1 joule? 1 joule
क्रॉस मल्टीप्लाई करके watt second. So watt second is joule. So if you multiply power and time, it gives you energy. It is power, it is time, it gives you energy. If watt second is energy, watt minute is also energy, watt hour is also energy, kilowatt hour is also energy. भाई देखो watt second, watt ऐसे रखूंगा, second को मैं मिनट बनाऊंगा, तो हो गया फिर से एनर्जी, watt पावर इंटू टाइम. watt को थोड़ा सा ऊपर कर दो, किलोवाट बना दो, 1000 watt, 1000 watt into second energy, 1000 watt into minute energy. Multiply, that means if you multiply power and time, it gives you energy anyway. So on this basis, I want to define energy unit, 1 unit of energy. जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उसी में मेजर करते हैं एनर्जी. सो आई वांट टू डिफाइन यूनिट ऑफ एनर्जी. फोर्थ पॉइंट, यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. कैसे डिफाइन होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी? दैट इज 1 किलोवाट आवर. दिस इज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. मतलब पावर इंटू टाइम, it should give you energy. What is 1 kilowatt? That is 1 into 10 raised to power 3 watt, 1000 watt. What is hour? That is 60 minutes. That is 60 into 60 seconds. That is 36 into 10 raised to power 5 watt second. That is 3.6 into 10 raised to power 6. What is watt second? That is joule. That means 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to power 6 joules. इसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इसी में मेजर करते हैं. जैसे वो आपको इंस्पेक्टर जो आप हमारे घरों में आता है और रीडिंग चेक करता है, वो क्या कहता है? आपने 10 यूनिट का एनर्जी या 20 यूनिट का एनर्जी यूज किया है. दैट मीन्स यू हैव यूज्ड द एनर्जी 20 किलोवाट आवर्स. दैट मीन्स 20 into this much of energy. And for every unit possibly they take 4 or 3 or 4 rupees per unit of energy. अगर आप इतना एनर्जी यूज करते हैं तो 4 रुपए का आपको फीस देना पड़ता है टू द गवर्नमेंट. तो और एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा. इफ यू यूज 1 किलोवाट कॉइल, हीटिंग कॉइल इन योर होम फॉर 1 hour, if you use 1 kilowatt heating coil for 1 hour, you have used 1 unit of energy. Means you have used 3.6 into 10 to the power 6 joules of energy, and you have to pay 4 rupees to the government. If you have 10 lamps, each 1 kilowatt hour for 2 hours, 10 kilowatt lamps for 2 hours, 10 into 2, 20 units of energy you have used. That means 20 to 3.6 10 to the power 6 joules of energy you used, and accordingly you have to pay to the government. Okay, this was unit of energy, 1 unit of energy. Fifth point, let me go to some examples. Fifth, have a look. मैं बनाऊंगा कुछ applications. I want to make some applications which where we can use these equations to get the answers quickly. Okay, एक lift है, elevator. It's a lift. It has 500 kg weight. It is kg mass, but if we say kg weight, then we have to multiply it by 10, acceleration due to gravity. 500 kg weight means 500 into 10. That means 5000 newtons. And it is to be lifted upwards with a velocity of 0.2 meter per second. Yeah. An elevator 500 kg weight is to be lifted upwards with a constant velocity of 0.2 meters per second. Okay, I will write. An elevator is to be lifted. An elevator is to be lifted upwards with velocity of 0.2 meters per second. Mass of the elevator is given. ठीक? What is the power of the motor which lifts it upwards? What is the power of the motor which lifts it upwards? Power of the motor. Power of the motor
चलो उसमें दोनों में आंसर निकालिए, वॉट्स में भी और हॉर्स पावर में भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो व्हाट शुड आई डू? देखिए, बताइए इसका वेट डाउनवर्ड क्या है? mg, दैट इज 500 इंटू 10, दैट इज 5000 न्यूटन। ये इसका डाउनवर्ड वेट है। इसको ऊपर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर की ओर इतना ही फोर्स देना पड़ेगा, ताकि दोनों ये फोर्स कैंसिल होकर के इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डाउनवर्ड फोर्स जो है, you have to match it with the upward force so that it moves upwards with a constant velocity, because constant velocity के net force 0 होना चाहिए। तो इस वेट को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो ये मोटर फोर्स अप्लाई करता है, तो how much force the motor applies? Obviously 5000 Newton. तो what is power delivered by the motor? फोर्स ये है, वेलोसिटी ये है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो Fv cos 0, that is 1. तो what is F? 5000. What is V? 0.2. तो ये पॉइंट एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 10. इट इज 1000 न्यूटन, सॉरी 1000 वॉट। मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे लगता है 1000 है। अच्छा, दिस इज द पावर ऑफ द मोटर विच लिफ्ट्स द एलिवेटर अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? ओके, now what is the power in horsepower? In horsepower it is in watts. तो हॉर्स पावर में पावर कितना है? शाबाश, this 1000 divided by 746 horse power, that is 1.35 horse power. कुछ ऐसे, you can check it out. So why should I divide 746? Because 1 horsepower is equal to 746 watt. तो यहां वाट का मैंने 1 हॉर्स पावर डिवाइड बाय 746 लिखा। इस वाट को मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया 1/746, तो वो ऐसे आ गया। दैट इज 1. लेट मी गो टू द 6th पॉइंट। अगेन आई विल सॉल्व examples using my equations, using what I have taught you. I will use that and I will try to get the results. Okay, now 6th point. 6th point, जरा देखिए, let me make a problem on inclined plane. ये मैंने inclined plane लिया, देखिए ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये अच्छा एंगल है बिकॉज sin 30 is 1/2. That makes calculation simple. The concept should be clear. Calculations you can do yourself. इसमें से एक ऑब्जेक्ट है, ओके, कॉट ही समझो। This cot is pulled up and with an acceleration a is equal to 1 meter per second square. Cot is being pulled up with acceleration of 1 meter per second square. कॉट मत समझो, ऑब्जेक्ट ही समझो। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, 2 kg का वेट है। आई वॉन्ट पुट इट एज स्मॉल एज पॉसिबल। 2 kg का वेट है, तो कॉट इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स, इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स to cause it acceleration. तो what is the question? The question is, क्वेश्चन जो मैं बनाने जा रहा हूं वो ये है कि पावर at time t is equal to 4 seconds after the start of the motion. At the end of 4 seconds पावर क्या है? यानी कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है। At 4 से at equal 4, आप दो टाइम नहीं मिलते। I'm not asking you what is the power from 0 to 4 seconds. I'm asking you what is power at 4 seconds. ठीक, अच्छा वो भी बनाएंगे, ठीक है। ये A कर दो, ये B पॉइंट कर दो। What is the power in the interval of 0 to 4 seconds? वो हो गया इंटरवल 0 to 4 से, उसको एवरेज पावर निकालना पड़ेगा, और ये इंस्टेंटेनियस पावर है। बी केयरफुल। सो व्हाट इज द एवरेज पावर? From 0 to 4 seconds, एवरेज पावर ये
तो 4 सेकंड पर क्या पावर है एट 4 सेकंड्स इटसेल्फ? 0 to 4 सेकंड तक इस इंटरवल में पावर क्या है, वो एवरेज पावर कहलाएगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। ये हम आपको करके देते हैं। चलिए, मुझे यही पता नहीं कि ये फोर्स कितना है भी। ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। ये फोर्स जो इसको एक्सेलरेट कराता है, ये फोर्स को एक्सेलरेट कराता है, और मुझे यही पता नहीं कि ये फोर्स कितना है, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो आप इसको अच्छी तरह से देखो फॉर ए मोमेंट, जस्ट फॉर ए मोमेंट ऑफ हाफ ए मिनट, इसको देखो। ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का है, ये इसको एक्सेलरेट कराता है। मुझे ये पता नहीं ये फोर्स कितना है, देखना चाहूंगा मैं, लेकिन ये एंगल देखो, ये मास देखो अच्छी तरह से, और थोड़ा सा पिक्चर अपने जहन में लाओ। इसका पिक्चर थोड़ा सा जहन में लाओ। एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वही पता नहीं कितना है, वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, चलो लेट मी रब इट ऑफ सो दैट आई कैन डू इट हियर। चलिए, 0 to 4 सेकंड्स, एवरेज भी निकालना है, इंस्टेंटेनियस भी निकालना है। देखिए मैं क्या करता हूं, पहले ये फोर्स मैं निकालना चाहता हूं। ये जो एक्सेलरेशन है किसने कॉज किया? इस फोर्स ने, लेकिन इसका बैकवर्ड फोर्स भी है mg sin थीटा। बताइए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या लिखूं मैं? F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बेस रूल है। Net force, all the force of the world acting on a body is equal to it is mass and it is acceleration. This is all the forces acting on the body. This is mass and acceleration. ये all है। जरा यहां देखिए all forces क्या है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा फोर्स आपका है जो एजेंट का है। तो बताइए क्या लिखूंगा मैं इनका, इस इक्वेशन को कैसे करूंगा मैं? दिस इज F माइनस mg sin theta. This is the net force. This force minus this force, the net force is equal to mass into acceleration. ये है acceleration। मैंने F माइनस ये क्यों लिखा? Why not this minus F? Because acceleration forward है, इसलिए ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, because उसने net acceleration is forward, इसलिए ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे इस फोर्स की वजह से निकालना है पावर। सो F इज इक्वल टू, ये उधर ले जाइए, M कॉमन निकाल कर A प्लस G sin थीटा। तो F को निकाल ही देता हूं मैं। M is what? 2, A is 1, G is 10, sin theta is sin 30, that is 1/2, ये हुआ 5, ये हुआ F is equal to 5, 1, 6, 12 न्यूटन। फोर्स 12 न्यूटन का है, 12 न्यूटन का फोर्स है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो पहले इसका वेलोसिटी था वो u इज इक्वल टू 0, इनिशियली इसने रेस्ट से स्टार्ट किया था। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर के निकालने के लिए? मुझे वेलोसिटी चाहिए एट 4 सेकंड्स। तब मैं लिखूंगा F डॉट V या FV, क्योंकि वेलोसिटी फॉरवर्ड की ओर और फोर्स भी फॉरवर्ड की ओर, तो F डॉट V FV ही हो जाएगा। और दूसरा जो है, मुझे अब वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालूं? देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, because acceleration is constant and you can use this formula. Velocity is equal to 0 plus acceleration is 1 time is 4, v is equal to 4 meter per second. अब बताइए इंस्टेंटेनियस पावर एट 4 सेकंड्स, क्योंकि 4 सेकंड टाइम पर मैंने वेलोसिटी निकाला। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू fv, why? Because both velocity and force are in the same direction. Applied force F is 12 and v is 48 watt. Answer 48 watt is answer. Now what about the average power from 0 to 4 seconds? लेकिन देखो 0 to 4 seconds जो एवरेज पावर की अब बात आएगी, आपको 0 to 4 सेकंड तक वर्क निकालना पड़ेगा, और उस वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा सारा टाइम। फ्रॉम 0 to 4 जो टाइम है वो 4 सेकंड ही है, वो टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। मैं वो भी निकालता हूं, लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड।
फिर से बताना चाहता हूं आपको, देखो आपको यहां टाइम 0 से 4 सेकंड तक आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो पहले मुझे निकाला है 12 न्यूटन, वही फोर्स है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकंड तक, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकाल। जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। You go s is equal to what is ut? 0 plus what is 1/2? What is acceleration? 1. What is t square? 16. 4 square 2 8. You go s is equal to 8 meters. बताइए वर्क कितना है? Everybody should tell me 12 into 8 because force forward, displacement forward. तो work done is fs. Cos theta वो आएगा नहीं, theta is 0 but cos 0 is 1. So it is fs, that is 12 into 8. So 6 9 96 joules. What is the power? Work done by time interval. What is work done? 96. And what's time? 0 to 4 4 seconds. That is 2 4 2 4. Answer. Is it the same as the earlier answer? No, वो ज्यादा था, 48 था वो. Anyway, this is the answer. What? Finished. It is the answer. This is the answer. 7th point. Again, I will make one more example so that it becomes very, very clear to you. 7th. Look at this. फिर से inclined plane बनाता हूं मैं. ये है कार, समझो ये कार 500 kg मास इसका है. It moves upwards with a velocity, constant velocity of course. Okay, let me make it simple ताकि इजी हो जाएगा डेरिवेशन में, कैलकुलेशन में. 36 km/h. That is 36 into 5 by 18. That is 2 meters per second. To 10 meters per second. यह है velocity. It moves with constant velocity upwards. Does it need any external force? इसको फिर से थीटा कर दो 30. Does it need any external force? Yes, it needs external force. Otherwise, ये जो पीछे की उसको इस पर force act करता है, it will not allow it to move with constant velocity upwards. ये तो इसको drag करेगा, ये तो इसका रोटेशन करेगा. इसका ये वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट का फॉरवर्ड फोर्स होना चाहिए. हमें क्या निकालना है? इस फॉरवर्ड फोर्स की वजह से हाउ मच पावर इज बीइंग डिलीवर्ड. सो इवन इफ दिस कार मूव्स अप द इंक्लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टिल पावर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द कार. वजह यह है कि इट कैन नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द फोर्स. ये एक्सटर्नल एजेंट क्या है? ये अंदर से कार इज यूजिंग फ्यूल. इसका मोटर अंदर से ही है, इट इज यूजिंग फ्यूल एंड इट पुश द कार फॉरवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. बट माय क्वेश्चन, ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए ताकि इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड्स? एवरीबॉडी शुड से दिस एफ शुड बी mg sin theta. Forward pulling force is this. Forward force should also be the same so that it moves with constant velocity. Constant velocity पर net force नहीं होता है. कांस्टेंट वेलोसिटी पर नेट फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, जीरो बन जाते हैं. इसका मतलब अगर ये फोर्स रियल फोर्स है विद ग्रेविटेशन, आपको इतना फोर्स फॉरवर्ड देना पड़ेगा, वो इंजन को देना पड़ेगा, वो अंदर से मोटर को देना पड़ेगा. हमें क्वेश्चन ये है कि इस फोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया है. हैव अ लुक, थॉमसन नजर बेटे. पावर इज इक्वल हाउ मच? एवरीबॉडी शुड नो बाय नाउ. FV. Why FV? F is forward, V is forward. What is F? mg sin theta. V is V. What is m? 500. What is g? That is 10. I take it 10 for calculation purposes. Sin theta 1/2 because sin 30. V, that is 10. This is okay. 25. 500 and 500. 25. 500 into 50, that is 25,000. It is 20 watt or 25 kilowatt.
because 1 kilowatt means 1000 watt. This is the answer. This is the answer. अगर मैं इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगा, what do you mean 25,000 watt? Means 25,000 joules of energy the engine expends per second. एक सेकंड में इतने joules of energy expend करता है to push the car in the upward direction. This is the last problem that I am showing you. Thank you. And again, I ask you to download the app and subscribe to the channel so that you get the lectures well in time. Thank you.